सॉरी, मुझे बना के दे देंगी। हाँ, hello, assalamu alaikum. People, I want to know that which topic do you want me to revise? Since we're starting 6:24, so we'll be ending at 8:30 also. But then I need to know your problematic areas. इसके अलावा सबसे पहले तीन चीजें मुझे बता दो. Do you know inorganic chemistry or not? One is what are homologous series? Then what is functional group? And the other thing is isomerization. Do you know about these definitions? कि ये क्या चीज होती है? Because ये definitions काफी common है. They're definitely going to come. Homologous series are those families in which possess similar chemical and physical properties. Are those families which have similar chemical and physical properties. Functional group क्या चीज होते हैं? They are atoms or group of atoms which gives the characteristic property. Characteristic property to a compound. And then we have isomerization. Isomerization is a phenomena where molecules have
Same molecular but different structural formula. Okay, these are the definitions. Last जो आपके पास एक चीज आती है that is polymerization. Polymerization से जो है macromolecules निकलेंगे. But उसको करने से पहले I just want to go through differentiations के हिसाब से कर लेते हैं. Do you know the difference between saturated and unsaturated compounds? Saturated and unsaturated compounds. If you know that, please keep on sharing ताकि मैं उसको नहीं touch करूँगी और मैं आगे बढ़ती जाऊँगी. Difference between saturated and unsaturated compounds. Do you know about it? Saturated compound means those which have carbon-carbon single bond, not this addition reaction or stuff. Carbon-carbon single covalent bond जिसमें होगा single covalent bond that will give us, or that will be said as a saturated compound. जिसमें carbon-carbon double bond होगा. Unsaturated compound. I hope the concept of saturated and unsaturated is clear to you. Now I want to understand if you know about the reactivity. How can you compare the reactivity of alkanes and alkenes? Again, how can you compare the reactivity of alkanes and alkenes? Do you know how to do this? Why alkanes are more reactive than alkenes? Can you do this question as well? Or can you, yeah. Because they are double bond, not rich in electron, उनके pi bond की वजह से electron movement या फिर bonding जो होती है weak होती है. It's not being rich of electrons. Okay, आगे बढ़ते हैं. I think substitution reaction आपको पता है that how does this happen? और उसके बाद हम discuss करते हैं addition reaction, because addition reaction के बारे में वो question कर लेता है. If I say addition reaction, तो इसके अंदर आपके पास जो reactions आते हैं जिस category में, number 1 is hydrogenation. Do you know what hydrogenation is or how does it happen? What is hydrogenation? What is hydrogenation and how does it happen? Any idea? Hydrogenation के बारे में, chlorination के बारे में, and then about bromination also. Do you know about it or you do not know about it? If you do not know about it, I can explain instead of wasting time. Are you people there? Can you hear me? This will react with alkene.
plus hydrogen and it will change into alkane. You are right. This will react in here. Alkene will react with chlorine and it will change into chloroalkanes, and here it will react with bromine plus alkene, and yes, it will change into bromoalkane. Okay, the next is if number 4. What will happen in case of hydration? Or do you understand what is the meaning of hydration? Or how will alkene react in case of hydration? Hydration का मतलब ये होता है that alkene is reacting with steam. Steam means H2O and it is converting into alcohol. That's what is the meaning of hydration. For example, अगर आपके पास ये इथीन है, ठीक है, और इथीन को अगर आप रिएक्ट करवाते हैं इसके साथ, स्टीम के साथ, विच इज गैस H2O, ये इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? इट विल कन्वर्ट इट इनटू ethanol. Here we have ethene and this will be converted into ethanol. That is what we call hydration. तो अगर मेरे पास ब्रोमीन होगा, सॉरी नॉट ब्रोमीन, इफ आई हैव ब्यूटीन, तो इसको किसमें कन्वर्ट करेगा ये? व्हाट विल बी द कन्वर्जन ऑफ ब्यूटीन इनटू? Very good. The conversion will be butanol. That's right. So that means you do understand this and you know how to do that. So I will not be wasting time on this. अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आपके पास आता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. हाउ डज bromine water reaction help to differentiate between alkane and alkane? Sure. Let me know when you're done doing. Okay, can you tell me this, that how does bromine water helps in the differentiation of alkenes and alkanes? क्या आप ये बता सकते हैं? अच्छा, अगर जो है ब्रोमीन रेड ब्राउन इन कलर होता है, अगर हम ब्रोमीन की बात करें, ब्रोमीन वाटर का मतलब है आपने ब्रोमीन गैस को जो है वो डिजोल्व किया हुआ है पानी के अंदर. सो ब्रोमीन वाटर इज रेड ब्राउन इन कलर. और अगर आप ब्रोमीन को ऐड करते हैं किसमें? एल्केन में, तो कलर रिमेन्स सेम. color remains same. And why colors remain same? Because bromine water alkane के साथ कोई reaction show नहीं करता. लेकिन अगर आप ब्रोमीन को रिएक्ट करवाते हैं एल्कीन के साथ, तो रेड ब्राउन टू कलरलेस हो जाता है. यानी जिसका रेड ब्राउन कलर था, इट विल टर्न इनटू कलरलेस. So that's how the bromine water helps us to differentiate between the presence of alkanes and the presence of alkenes. Alkane के present में color remains same, no change. Yes, and in the case of alkenes, the color become changed or it become useless, colorless. Sorry. Then the next thing is what we say combustion reaction. Okay. I hope you all know, you both know that combustion reaction क्या चीज होती है. Combustion reaction में अगर कोई भी alkane या alkene होगा, तो चाहे मैं यहाँ एल्केन की एग्जांपल लिख रही हूँ, बट जो भी एल्केन या एल्कीन होगा, व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल टर्न इनटू व्हाट? ये प्रोडक्ट्स में क्या बनाएगा? Can you people tell me quickly, please? Yeah, that's right, H2O plus कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन अगर मैं फ्लेमेबिलिटी को कंपेयर करूँ, किसकी फ्लेमेबिलिटी या फिर किसके अंदर ज़्यादा सूटियर फ्लेम होता है और किसमें कम सूटियर फ्लेम होता है?
मतलब अगर हम एल्केन को कंपेयर करें, एल्केन को हम कंपेयर करें किसके साथ, एल्कीन के साथ. सो in this, alkenes burn with much sootier flame. मतलब बहुत धुआं होता है. एंड दिस इज कॉल्ड कंप्लीट कंबशन. ये जो इक्वेशन आ रही है, दिस इज फ्रॉम कंप्लीट कंबशन. पूरी तरह से बर्निंग होगी तो उसके बाद ये इक्वेशन बनेगी. एल्कीन को अगर हम बर्न करते हैं वो मच सूटियर फ्लेम के साथ बर्न होता है. कैन यू टेल मी व्हाई? एल्केन के अंदर जो बर्निंग है, दैट बर्निंग इज विद अ लेस सूटियर फ्लेम और लेस स्मोक, while alkene के अंदर जो burning होती है with a more smoke and the sootier flame. Can you tell me the reason why does it happen? Yeah, no, we can't say no smoke in complete combustion reaction, but yes, the smoke will be very, very negligible. Like it will not be that much, which can be felt very easily. Well, in case of alkene, yes, it does feel very easily. But then you need to tell me the reason why does it happen? Right, but why alkene has burned with much sootier flame? What is the reason behind this? That's my question. Carbon to hydrogen ratio. अगर मैं कंपेयर करूं कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो, तो कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो जो है वो इंक्रीज हो जाती है इन केस ऑफ एल्कीन्स. और ऐसा इस वजह से है बिकॉज ऑब्वियसली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का मतलब ये होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रीजन तो है, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से व्हाट इफेक्ट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन लेस हो गया. जब हाइड्रोजन लेस हो गया तो ऑटोमेटिकली कार्बन की जो अमाउंट है या कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो गई. जब कार्बन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो जब एल्कीन बर्न करेगा तो वो सूटियर फ्लेम के साथ बर्न करेगा. एंड यू आर राइट के जब कंप्लीट कंबशन होता है तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है. अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि मार्जरीन के लिए कौन सा इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज होता है? व्हाट इज इंडस्ट्रियल प्रोसेस which we can use for the manufacturing of margarine? Do you know the process of formation of margarine? Please say yes or no, a little in a little hurry. Margarine जो है basically this is the addition, this is hydrogenation. Hydrogenation में का जो process है उस वो margarine बनाने के लिए use होता है. उसकी specific conditions होती हैं, वो specific conditions आपको याद होनी चाहिए. अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास इथीन है, इथीन को आप रिएक्ट करवाते हैं H2 के साथ, कितना टेम्परेचर होगा? 200 डिग्री सेंटीग्रेड निकल की प्रेजेंस में. दिस विल टर्न इनटू लाइक दिस. This is the process of margarine. What you need to remember or memorize are the conditions, because they will going to definitely, yeah, oils undergo hydrogenation or the fats undergo hydrogenation. That is called hydrogenation. What is cracking of petroleum, and what do you get out of cracking of petroleum? Any idea? What is cracking of petroleum and what do you get after the cracking of petroleum?
क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के अंदर बेसिकली जो इसका वो है मतलब क्रैकिंग जो इसकी डेफिनेशन है what you say is that cracking is the breaking down of long chain hydrocarbons into smaller molecules. Long chain hydrocarbons into smaller molecules. For example, आपके पास है long chain hydrocarbon. मैं सिक्स का ले लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 ठीक है और इसको मैं रिएक्ट करवा रही हूँ किसके साथ यहाँ पे इसके साथ सब हाइड्रोजन आ जाएंगे और अभी समझ जाएंगे इन पोजिशन के ऊपर हाइड्रोजन हैं क्रैकिंग का मतलब ये होगा दैट इट विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट ठीक है और स्मॉलर कंपोनेंट में अब आपके पास एक मॉलिक्यूल बन जाएगा कितने कार्बन का 4 कार्बन का और एक मॉलिक्यूल डेफिनेटली जो आपके पास बनेगा देन इट विल बी अ एल्कीन दैट इज वन थिंग व्हिच यू नीड टू रिमेंबर कि क्रैकिंग के अंदर इस प्रोसेस में वन विल बी एन एल्केन एंड द अदर वन विल बी एल्कीन क्रैकिंग का जो प्रोसेस होता है दैट इज या साथवन यू आर राइट क्रैकिंग का प्रोसेस होता है वो दो तरह का होता है या फिर दो तरह की क्रैकिंग होती है the one which is done by the catalyst यानी दो तरह की क्रैकिंग के नाम मैं आपको बता देती हूँ I hope by name you can identify one is called catalytic cracking and the other one is called thermal cracking can you differentiate between catalytic and thermal cracking can you tell me the difference between two of them catalytic and thermal cracking Yeah, that's right, Satwan. Thermal cracking, any breakdown of compound is happening because of heat, and catalytic cracking is a breakdown is happening because of a catalyst. You're right. Okay, then comes the importance of cracking. If I have to ask you that how does the cracking process important, then what will be your answer? How cracking is important? Cracking help to produce petrol. The bigger molecules cannot be, yeah, supply of fuels is improved, and the bigger molecules cannot be obviously used. And generally, it is basically converting the small fraction, and that is for the fuel formation also. So if we need to compare alkanes and alkenes, I will ask you the comparisons, and you can do it very quickly. अगर हम इनको कंपेयर करते हैं एल्केन्स को और एल्कीन्स को so on the basis of their molecular structure so number one is molecular structure how will you compare the structure of alkanes and alkenes क्या difference होता है obviously इनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो इनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है that is the one difference as a molecular structure अगर हम कंपेयर करें इनकी रिएक्टिविटी को तो ये भी आप लोग पहले पढ़ चुके हुए हो मतलब हमने कर लिया दैट दिस इज लेस रिएक्टिव जस्ट समराइजिंग इट एंड दिस वन इज more reactive and this is because of the presence of single covalent bond and double covalent bond reaction अगर मैं इसके types of reaction की बात करूं तो in case of types of reaction
This will going to do a substitution reaction, and this will going to do addition reaction, and it is again because they are very very reactive. The next comparison between और for alkanes and alkenes की अगर हम बात करते हैं, the other thing would be flammability. Flammability में they form less. I'm doing साथ less smoky इसका flame होता है. Is just a summary और अच्छा है कि अगर आप उसको याद कर लोगे. Less smokier flame होगा और it will produce more smokier flame. Then ability to go under polymerization इसकी नहीं होती है. Not capable of polymerization, and this one undergoes addition polymerization. So these are the reaction. These are the differentiations. ये हमने कर लिया इसका polymerization. और ब्रोमिनेशन आप लोग ऑलरेडी कर चुके हुए हो कि अगर मैं ब्रोमिनेशन की बात करूं तो इसके अंदर नो चेंज आता है, यानी ब्रोमीन का कलर चेंज नहीं होता, और इसके अंदर इट विल टर्न इनटू कलरलेस, एंड दैट्स हाउ वी कैन फिर. साथ alkenes has the possibility of complete and incomplete both combustions. That is why we never say that alkenes will ever have, alkenes will definitely going to be incomplete combustion. We are not generalizing it. No, that's wrong. But we would say that it will be burning with more smokier flame. But yes, in alkenes, there is a possibility of both complete and incomplete combustion equally. I hope that this does make sense to you. And I hope that you have clicked the picture so that I can move on. Great. So now I'll be moving on carboxylic acid and alcohols. Carboxylic acid और alcohol की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो हमारे पास process आता है, that process is fermentation. Can you tell me what does happen in fermentation? और fermentation होती है for producing fermentation. हम number one हम किस लिए fermentation को study कर रहे हैं? We are studying or revising fermentation for producing ethanol. देखो, एक तो इथेनॉल प्रोड्यूस करने का तरीका क्या है. इथेनॉल प्रोड्यूस करने का एक पहला तरीका ये विच इज़ नॉट फर्मेंटेशन, बट मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रही हूँ कि अगर हम एल्कीन को रिएक्ट करवाएं H2O के साथ तब भी हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा. ठीक है, एक तो ये तरीका है. या फिर बेटर अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होकर बात करूँ तो अगर मैं इथीन को रिएक्ट करवाती हूँ किसके साथ, H2O के साथ, तो इथीन को H2O के साथ रिएक्ट करवाने पे क्या मिलता है, इथेनॉल मिलता है. दिस इज वन काइंड ऑफ रिएक्शन दैट हैपेंस और थ्रू विच वी कैन गेट इथेनॉल. फर्मेंटेशन हम किस लिए करते हैं? फर्मेंटेशन अगेन इज अ प्रोसेस विच इज हैपनिंग फॉर प्रोड्यूसिंग इथेनॉल. what will be the first step for producing ethanol? सबसे पहले स्टेप के अंदर आप क्या लेते हैं, आप ग्लूकोज लेते हैं. ठीक है, और आप ग्लूकोज को जो है वो मिक्स करेंगे किसके साथ, यीस्ट के साथ मिक्स करेंगे. और आप टेम्परेचर को कितने पे रखेंगे, यू विल कीप द टेम्परेचर एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ हियर इज द थिंग, दिस इज द स्पेशल कंडीशन. व्हाई इज दैट? बिकॉज अगर लो टेम्परेचर होगा तो लो टेम्परेचर हमारे लिए फेवरेबल नहीं होता, क्योंकि यीस्ट नॉट एक्टिव. अगर लो टेम्परेचर होगा तो यीस्ट एक्टिव ही नहीं होगा, राइट. और अगर हम हाई टेम्परेचर पे रखते हैं, यीस्ट टेम्परेचर से अगर हम हाई टेम्परेचर के ऊपर चले आते हैं तो यीस्ट क्या हो जाता है, यीस्ट डाइज. दैट इज द अदर थिंग. नंबर टू अगर हम बात करें द प्रोसेस,
सो फर्मेंटेशन के बीच में जो है वो क्या प्रोड्यूस होती है, बिकॉज ऑफ द रिएक्शन बिटवीन ग्लूकोज एंड जो यीस्ट उसको बर्न करता है। बेसिकली होता ये है कि C6H12O6 है आपके पास, यीस्ट इसको इसको ब्रेक करेगा और एक इसमें ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा C2H5OH, यानी आपके पास बनेगा इथेनॉल। या इट इज अ काइंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन and it will turn into carbon dioxide. So आपके पास बनती है carbon dioxide effervescence बनते हैं. If you need to confirm that yes, carbon dioxide is producing, how can you confirm about it? Presence of carbon dioxide can be confirmed. Presence of carbon dioxide can be confirmed with the help of lime water test. Sorry, with the help of lime water test. और इसके बदले में लाइम वाटर जो है वो ऑब्वियसली इट विल टर्न मिल्की, दैट इज द वन थिंग विच यू कैन डू। और हमारे पास जो इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, इथेनॉल दैट हैज बीन प्रोड्यूस इन इट इज 50% इन द कॉन्सेंट्रेशन। इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी दैट इज 50% इन द कॉन्सेंट्रेशन। इससे ज़्यादा हम प्रोड्यूस करवा नहीं सकते, बिकॉज अगर एक कॉन्सेंट्रेशन एक्सीड करेगी, मतलब इससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन पे अगर बनेगा तो इस कॉन्सेंट्रेशन से एक्सीड करने पे यीस्ट कैन डाई, यीस्ट मर सकता है। एंड यीस्ट इज बेसिकली इज डूइंग दैट मेटाबॉलिक एक्टिविटी व्हिच साद हैज बीन रेफरिंग टू, कि वो इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं और यीस्ट की डेथ हम अफोर्ड कर नहीं सकते। दैट इज वाई मोर देन 15% कॉन्सेंट्रेशन कैन नॉट बी प्रोड्यूस इन हियर। अच्छा, एक तो मैंने आप लोगों को प्रोसेस बता दिया था। वन प्रोसेस थ्रू विच द इथेनॉल कैन बी प्रोड्यूस इज बाय रिएक्टिंग इथीन with H2O, that what we call in short hydration of ethene, through which you can produce ethanol. The other is fermentation. Third process क्या हो सकता है इथेनॉल की प्रोडक्शन का? आई रिपीट, अगर मैंने इथेनॉल प्रोडक्शन की बात की है तो इथेनॉल प्रोडक्शन के मैंने आपको 3 प्रोसीजर्स बताए हैं। The one procedure process which I told you is hydration of ethene, जिसकी वजह से ethanol बनेगा, right? And the other process is fermentation, जिसकी वजह से ethanol बनेगा. What can be the third process through which we can produce ethanol? Can you people reply to this question? Number 3 is fractional distillation. Fractional distillation is the third process through which the production of ethanol is possible. Fractional distillation में two miscible liquids अगर हों तो हम उससे ethanol को separate out कर सकते हैं on the basis of their boiling points. The next question or the next thing which I want you to tell me is the combustion. अगर मैं C2H5OH को reaction करवाती हूँ O2 के साथ, what will be the products at the end of the reaction? What will be the process at the end of the reaction when ethanol is reacting with carbon dioxide? The reaction will be carbon dioxide and water. It's too late to answer this, but it's okay.